Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9th. Hope you will be fine, beta. Today is 15 date and Saturday. We are going to do the again figures of speech, as you know. Okay, let's start to read. The angry sky roared, the bloody sun at noon, the leaves danced on wind, the moon was resting in the sky. Okay, have you gotten any idea about this? What figure of speech we are going to discuss today? Okay, before going to the topic, we are going to underline some adjectives that some non-living things are doing there. Okay, you can see that I have underlined the words the angry sky, bloody sun, leaves danced, and moon resting. In these sentences, you can see that a noun that is not living, sky angry है, sun bloody है, leaves dance कर रहे हैं and moon rest कर रहा है. In which figure of speech these things are doing these? Okay, grade 9th, as you are watching the topic of today, that we have done the personification. In Urdu you can say शख्स फर्ज करना, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ऐसी क्वालिटी आइडेंटिफाई करना जो किसी इंसान में हो, यानी उसी चीज़ को एक शख्स तसव्वुर करके उसके साथ रिजेंबल करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू आर वॉचिंग ऑन द वाइट बोर्ड दैट सनफ्लावर नॉडेड, डैफोडिल्स डांस्ड एंड मून टुक रेस्ट. अब यू कैन सी दैट सनफ्लावर जो है वो नॉडेड कर रहा है, यानी सर का इशारा दे रहा है. तो हमने इसको एक इंसान यानी शख्स तसव्वुर कर लिया है कि वो सर का इशारा दे रहा है. डैफोडिल्स हैं, अभी नरगिस के फूल हैं, डांस कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये तो ह्यूमन बीइंग का काम है. एंड मून कैसे रेस्ट कर सकता है, हमने यहाँ भी मून को एक शख्स तसव्वुर कर लिया है कि दैट ही इज़ टेकिंग रेस्ट. ओके, सो इन पर्सोनिफिकेशन हम किसी भी चीज़ को शख्स तसव्वुर करके उसके साथ एडजेक्टिव ऐड करते हैं, वर्ब ऐड करते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. ओके, वन मोर थिंग दैट इन द पर्सोनिफिकेशन हम इस पे हाई लेवल की रिजेंबलिंग करते हैं जिसका सोच से कोई लेना देना नहीं होता. High level of resembling is used in personification which is not acceptable by a common man's mind. Okay, now come to the book and we have noticed this thing that on page number 54 we have the personification topic. It is a figurative language technique which an object or idea is given human characteristics or qualities. As I have told you बेटा कि इसमें हमें किसी भी चीज़ को एक शख्स तसव्वुर कर देते हैं, एक शख्स मान लेते हैं और फिर उसके साथ ऐसी क्वालिटी, ऐसा वर्ब ऐड कर देते हैं जो कि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता. बट दिस इज़ द हाई क्वालिटी ऑफ इमेजिनरी. द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क एंड सनफ्लावर नॉडेड इन द विंड. यू कैन से द एग्जाम्पल. ओके, यू कैन से द एग्जाम्पल. द स्काई स्कैपर was so tall that it kissed the sky. And you can see the high level of thinking and resembling the things that are unmatched with each other, but we have to accept it because this is personification. Next you can see this that the sun glared angrily upon the desert. Now how is it possible that a sun glared? So this is the personification and we can accept it. We have to accept it. Now you can see I can't believe my car died. Car is a non-living thing and died तो person होता है. So they are resembling a person to the car because died is not possible for a car. Okay, it means I can't believe my car stopped working. Okay, so this personification means this. Now grade 9th, come to the book. We have page number 54. See activity, pick out one example only of personification from the poem. This is your home task. You will find the personification, that is high level of thinking and resembling to a non-living to a living thing, and the qualities, the verbs you can identify.
from the poem and daffodils, and inshallah I will check your home task when you will send me the pic after doing this. Allah Hafiz.